Hello everybody, welcome to the race class. Today we are gonna do what? 311 ST number 311, right? 311. इसमें सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एरर से है, वो देखते हैं. इट इज़ बेटर टू कीप, वेरी गुड, सही है. इट इज़ बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर once head in the face of danger मतलब नेगेटिव, losing one's courage ये भी नेगेटिव. तो एक्चुअली यहाँ पे rather than का यूज़ होना चाहिए, rather than, not only than. It is better to keep one's head in the face of danger rather than losing one's courage, right? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं it is better to keep, right? verb, it is better to keep one's head. अब अगर हम लोग ये यूज़ करते हैं it is better to keep one's head in the fact of danger than losing one's courage, नहीं, rather than यहाँ पे हम लोग को यूज़ करना चाहिए rather than. जब हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं it is better to keep, right? तो we always use rather than over there instead of using only than. So B would be the wrong sentence, wrong option. Now if I got, okay 5, इफ़ आई गॉट, ये कंडीशन से है. फॉर एग्जाम्पल कंडीशन में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि अगर इफ़ से स्टार्ट हो और लिखा हो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट. इफ़ ही नहीं, जितने भी कंडीशनल वर्ड होते हैं, कंडीशनल वर्ड, राइट, इस स्ट्रक्चर में हो तो आगे आने वाला स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 देन ऑब्जेक्ट, राइट. सो अगर ये प्रेजेंट में हो तो सब्जेक्ट प्लस इफ प्लस सब्जेक्ट V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट. सो व्हाट इट बी, नेक्स्ट जो होगा वो विल के साथ स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. और अगर ये पास्ट परफेक्ट में हुआ, फॉर एग्जाम्पल इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 देन ऑब्जेक्ट. सो व्हाट वुड बी, जो नेक्स्ट आपका क्लॉज होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव. तो अभी हम लोग देख रहे हैं इफ आई गॉट रिच, ये V2 है, राइट. आई वुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, ओके, आई सब्जेक्ट है, वुड लगा हुआ है, मतलब कि दिस इसको फॉलो कर रहा है, सो नो एरर, सिंपली. नेक्स्ट, शिखर धवन इज इक्वली एज गुड एज कोहली 70 years, राइट. तो इसमें हम लोग इक्वली वर्ड को क्यों यूज़ करें? इक्वली का मतलब ही होता है एज गुड एज, राइट. शिखर धवन इज एज गुड एज कोहली, इक्वली एज गुड एज कोहली मीन्स व्हाट? सो इक्वली इज सुपरफ्लोस, अननेसेसरी, राइट. इसको बेकार की चीज़ें हैं, राइट. नेक्स्ट, द टीचर गिव्स मेनी एग्जाम्पल्स टू, for what? The idea containing in the poem, right. अब यहाँ पे bring about, bring in, bring forth and bring out, ये सारे दिए गए हैं, right. So एक एक कर करके इसको देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है. bring about का मतलब होता है to make something happen, especially to cause changes in a situation. You can say to make, I'm going to write to make something happen, कुछ होना, especially to cause changes in a situation, to cause changes in a situation, right. What is the meaning of bring in? Everybody know, मतलब to produce something, bring in, to produce. What is the meaning of bring out? Bring out का भी मतलब to produce a new product, to produce a new product. And what is the meaning of bring forth?
to give rise मतलब किसी को उठाना, to give rise to, right? So these are the things. So what would be, the teacher gives many examples to idea containing in the poem, मतलब to produce a new idea, right? So that would be bring out, लाने की कोशिश कर रहा है, bring out, कैसा, नया चीज. The teacher gives many examples to bring out the idea contained in the poem, right? So D would be the right option. Now next, 80. A foreign language or mathematics may call for 3 or more hours per class, at least until you have mastered the, what it be, the fundamentals, right? Not the topic, not the subject, and not the language. A foreign language or mathematics, mathematics may call for 3 or more hours per class, at least until you have mastered the fundamental. जब तक आप fundamental में मास्टर नहीं होते हैं, तो सब्जेक्ट में मास्टर नहीं होते हैं तो फिर पढ़ने की क्या ज़रूरत, मतलब मास्टर हो गए तो फिर व्हाट, टॉपिक में होगा तो क्या, फंडामेंटल में जस्ट यू नीड टू बी अ मास्टर, राइट? नाउ 81. इफ यू थिंक टू मच, ओके फाइन, इट विल योर जजमेंट, क्या होगा, इट विल इम्पेयर योर जजमेंट. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पेयर, मतलब हानि पहुंचाना. यू कैन से रून, हानि पहुंचाना. बर्बाद करना, राइट? इफ यू ड्रिंक टू मच इट विल इम्पेयर योर जजमेंट, मतलब ये आपके जजमेंट को हानि पहुंचाएगा, राइट? इम्पेयर का मतलब क्या होता है, इम्पेयर का मतलब प्रिवेंट, बाधा डालना, प्रिवेंट. इम्पोज मीन्स व्हाट, लागू करना, यू कैन से, मतलब इम्पोज करना, राइट? इन्फ्लिक्ट या पुट और सेट समथिंग, यू कैन से इन्फ्लिक्ट. एंड इम्पेल, इम्पेल मीन्स उकसाना, उकसाना, राइट? सो विच वुड बी द एप्रोप्रिएट, मतलब रून, बर्बाद कर देगा वो. इफ यू ड्रिंक टू मच इट विल रून योर जजमेंट, राइट? नाउ नेक्स्ट, लॉसी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉसी? लॉसी मीन्स घटिया, राइट? और क्या करना है हम लोगों को, 4 अल्टरनेटिव्स में से बेस एक्सप्रेशन. लॉसी मीन्स घटिया, राइट? घटिया. इनफेरियर, यू कैन से inferior. So what would be, unbearable, unpleasant, awful, what? So that would be unpleasant, right? Awful मतलब भयंकर, भयानक, you can say, मतलब fiery, right? And stinking, stinking का मतलब बदबूदार, महकना, you can say, right? Smell, olid, hateful smell, you can say, right? So unbearable, जिसको सहा ना जाए, no, not at all. Awful, fiery. Unpleasant का मतलब जो अच्छा ना लगे, घटिया, inferior, poor quality, right? So B would be the answer. Camouflage. What is the meaning of camouflage? छल करना, मतलब किसी को बेवकूफ़ बनाना, you can say छल करना. If you want to write some synonyms, you can disguise, G-U-I-S, disguise, or you can say cloak, C-L-O-A-K, right? Or you can say mask, M-A-S-K, right? So छल करना is. So now
what would be? A would be the right option. Cover means what? Cover means ढकना. Fabric everybody know, and demonstrate मतलब दर्शाना, right? ये कोई भी नहीं होगा. Camouflage मतलब disguise, right? Now next, grumpy. Grumpy किसको बोलते हैं? Grumpy बोलते हैं angry को, right? Angry, right? So what would be the antonyms? मतलब opposite, right? Grumpy. So definitely that would be what? C. Cheerful, right? High-headed नहीं, influential नहीं, affluent नहीं, no, not at all. Affluent का मतलब क्या होता है? Wealthy, right? Sampan, blessed, you can say. Affluent, you can say blessed. Or affluent means wealthy. Wealthy, right? Influential मतलब प्रभावित करने वाला, right? प्रभावशाली, impressive, you can say. Impressive, right? The next, so cheerful would be the answer. High-headed मतलब ऊंचे स्तर का, high-headed, high society. Now next, 85. Propensity. Propensity बोलते हैं ट्रेंड को, टेंडेंसी को, right? Attitude you can say trend or tendency, or you can say attitude, aptitude, right? So these are the synonyms of propensity, right? So what would be the opposite of? क्या होगा? Opposite होगा A, right? Disinclination, right? Disinclination का मतलब क्या होता है? जो टेंडेंसी से अलग हो, हट कर हो, out of tendency, out of trend, you can say, right? Out of trend. If you talk about forecast का मतलब जानते हैं? For का मतलब what is the meaning of for? For means before, इसीलिए B में भी for use हुआ है, right? Forecast, पहले कास्ट, right? Forecast means भविष्यवाणी, you can say forecasting, पुनर्नुमान, right? And stagnation मतलब stagnity, fixed होता है जो, you can say, stability, you can, और fixture you can say, fasten जो लगा हुआ है, stability, right? Stability. And restlessness मतलब restlessness, this is as common as you can think. Now next है 86. The party high command wanted to stave off. What is the meaning of stave off? वर्ड का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अब बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो वोकैबुलरी बेस्ड आ रहे हैं. सो वोकैबुलरी मस्ट बी हो देयर, राइट? सो स्टेव ऑफ का मतलब होता है रोकना, राइट? सो व्हाट इट बी? क्या हुआ? द पार्टी हाई कमांड वांटेड टू व्हाट? अलाउ इट टू टेक? नो, प्रिवेंट. प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना. D would be the appropriate answer. Now 87. The thief passed himself off. Passed himself off मतलब as a ticket examiner. Means you can say disguise, अभी हमने बताया था, छल करना, right? Disguise himself, right? Best alternatives idioms: disguise himself. The thief pass himself की जगह पर of disguise himself भी लिख करके उसको बोला जा सकता है. और what will be the meaning of idioms pass himself off? मतलब disguise himself.
अपने आप से एज अ टिकट एग्जामिनर, राइट. बर्ड्स ऑफ द सेम feather, दिस इज वेरी कॉमन इडियम्स, राइट. बहुत बार पूछा गया है, मतलब पर्सन ऑफ द सेम कैरेक्टर, पर्सन ऑफ द सेम कैरेक्टर, डी वुड बी द आंसर. नाउ वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड्स बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल्स, एग्जैक्टली. अब इंटोमोलॉजी का मतलब क्या होता है? इंटोमोलॉजिस्ट बोलते हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, राइट. द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, राइट. नाउ डेमोगॉग, इससे पता चल रहा है मीन्स पर्सन हु, आई मीन यू कैन से कि जो अपने बेनिफिट के लिए हमेशा काम करते हैं, राइट. अ पर्सन, यू कैन से अ पर्सन हु ऑलवेज वर्क्स फॉर his or her benefit, right. तो अभी तक देख रहे हैं कि ये दोनों, ए और बी आपका ऑप्शन नहीं है, राइट. नाउ नेक्स्ट है एगोनिस्ट. व्हाट इज द मीन ऑफ एगोनिस्ट? द स्टडी ऑफ मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रेस. इसको मैं नीचे लिख दूं यहां पर. The study of methods of improving the quality of the human race, especially by selective breedings, right. So what would be one who studied election trends by means of opinion polls? Yoga psephologist, right. Psephologist would be the best option. इसको नोट कीजिए और इसे याद करने की कोशिश कीजिए. नाउ नेक्स्ट 90, एक्सेसिव डिजायर ऑफ रिलीजन. वेरी गुड, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. सो व्हाट वुड बी? ये जो थियो है, ये थियो मीन्स होता है रिलीजन और गॉड. तो जहाँ भी रिलीजन आए और गॉड आए, राइट, तो ये थियो वर्ड का मतलब होता है रिलीजन और गॉड. सो बिना देखे आप आंसर कर सकते हैं. एंथ्योमेनिया, राइट. एर्गोमेनिया, एक्सेसिव डिजायर ऑफ वर्क. एर्गोमेनिया, excessive desire of work, right. No, dipsomania. What is the meaning of dipsomania? Excessive desire of alcohol. Excessive desire of alcohol, right. Dipsomania, right. Melomania, excessive desire of music. Excessive desire of music, right. So ergomania, excessive desire of work. Dipsomania, excessive desire of alcohol. Melomania मतलब excessive desire of music, and excessive desire of religion, enthymomania, right. Now 91, one who is ready to start argument or fight. जो argument और fight के लिए always ready रहता है, what would be
bellicose. Bellicose is the right option. Apostle, apostle का मतलब होता है a strong believer, a strong believer, right. And callous मतलब a man devoid of kind feeling or sympathy, you can say. संवेदनहीन, you can say. हिंदी is good. संवेदनहीन, जिसके पास कोई फीलिंग्स ना हो. A man devoid of kind feelings. A man devoid of kind feeling, अच्छी feeling, right. And celibate, this is also important word. One ब्रह्मचारी जिसको बोलते हैं, one who is unmarried, right. Now next, 92. In questions given below, 4 words which are lettered ABC have been printed off. Which one is correct spelled? The option of the word is what? चलो देख लेते हैं इसको. तो correct 4 words which are lettered have been printed off. Which one is correctly spelled? The option of that word is the answer. Okay, correctly spelled कौन किया गया है? So contemptuous, contemptuous, yes, contemptuous is right. Because अगर मैं देखता हूँ spontaneous, so this is what is spontaneous. यहाँ पर u की जगह पर e होना चाहिए, right. Spontaneous. And if we talk about gorgeous, so this is what, ये gorgeous भी गलत है, right. GORG ये सही है, EOUS होता है, EOU, and इसे हम लोग हटा दे तो ये सही हो जाएगा, right. नेक्स्ट वर्ड है what? इसका ये पूरा ही गलत है, राइट. इसे हम लोग राइट स्पेलिंग ERRONEOUS, NEOUS, right. So the right is what? Contemptuous. Next, 93. 93 में a part of the sentence is underlined below it. It are given alternate. Sorry, यहाँ पे गलत है. A part of sentence is underlined below. It is given alternatives to the underlined part ABC, which may improve the sentence. Choose the correct alternative in case no improvement is due. Okay, fine. Just we have to pick the correct alternatives and improvement, right. So if we talk about we, okay, fine. We have, we के साथ have का use किया गया है, okay, right. No less than 1,000 student. less वर्ड्स थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है. लेस दैन मतलब व्हाट? ये तो अनकाउंटेबल के लिए, UCN के लिए यूज़ होता है, लेकिन स्टूडेंट 1000 स्टूडेंट मतलब काउंटेबल है. सो हम लोगों को लेस को यूज़ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं. हाँ, फ्यूअर इज यूज फॉर व्हाट? countable. So we have no fewer than 1,000 students in our college. C would be the best option. Now next, 94. Chennai is, by the way, a cosmopolitan city. 94 में by and by the by and large, on the large, and no improvement. So that would be by and large. By and large का मतलब होता है मिला जुला कर, right, on the whole,
मिला जुलाकर ऐसे बोलते हैं ना, और यू कैन से ऑन द होल, राइट. सो बाय द वे मतलब हालांकि, बाय द वे को यूज़ नहीं करना चाहिए. चेन्नई इज़ बाय एंड लार्ज कॉस्मोपॉलिटन सिटी. मिला जुलाकर एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यू कैन से. नाउ नेक्स्ट 95. सर्टेनली मैन मस्ट लुक अप. ओके, यहाँ पे बहुत सारे मीनिंग दिए हैं. लुक टू, लुक अप, लुक इन. सबसे पहले मैं आप लोगों को लुक के बारे में बता दूं कि लुक का मतलब देखना तो होता है, बट ये एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, नॉट आई, राइट. EYE. दैट्स वाई ऑलवेज लुक के साथ हम लोग हमेशा किसी न किसी चीज़ों को यूज़ करते हैं, किसी न किसी प्रपोजिशन को यूज़ करते हैं. लुक एट, गेटिंग माई पॉइंट. लुक फॉर, लुक आफ्टर. लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, राइट. सो लुक अप, लुक अप का मतलब क्या होता है? फाइंड द इंफॉर्मेशन इन अ बुक और मैप. फाइंड द इंफॉर्मेशन in the book or map, etc. Right. Look for, look for का मतलब पता लगाना. Means what? Try to find something. Try to find something. Now look to, means rely on somebody. Rely on somebody or something, right. And look in, visit a person. Visit a person or place, you can say. For a short time, right. For a short time. So now, so which should be appropriate? Exactly. Certainly man must look for the future and find ways of providing for his needs. So A would be the right answer. Now next, हमारे पास कुछ ये पैसेज है जिसको पढ़ना है, उसके बाद हमें आंसर करना है. इसको पढ़ करके देखते हैं क्या ये कहने की कोशिश कर रहा है, इसमें राइटर का सेंट्रल आइडिया क्या है और कौन कौन से मेन पॉइंट हैं जिस पर हम लोग को एम्फेसिस करना चाहिए. सो नाउ start. Many sociologists have argued that there is functional relationship between education and economic system. They point to the fact that mass formal education began in industrial society. They note that the expansion of the economics of industrial societies is accompanied by a corresponding expansion of their educational systems. They explain this correspondence in terms of the needs of industry for skilled and trained manpower, needs which are met by the educational system. Thus, the provision of mass elementary education in Britain in 1870 can be seen as a response to the needs of industry for a literate and numerate workforce at a time when industrial processes were becoming more complex and the demand for technical skills was steadily growing. Very good. Just we were talking about क्या correspondence courses और जिस तरीके से expansion हुआ है educational system का, we were just talking about that, right. एंड थोड़ा सा एग्जाम्पल्स लिया हम लोगों ने ब्रिटेन का. दैट्स द प्रोविजन ऑफ मास एलिमेंट्री एजुकेशन इन ब्रिटेन इन 1870 कैन बी सीन एज अ रिस्पॉन्सेस टू द नीड्स ऑफ industry for a literate and numerate workforce at a time when industry process
were becoming more complex and the demand for technical skills were steadily growing. So now 96 में देखते हैं directly. The industry needs a literate workforce because बिल्कुल direct hit किया हुआ है. That would be its operations need intricate technical knowledge. The industry needs a literate workforce. क्यों? क्योंकि इट्स ऑपरेशन नीड, उसके ऑपरेशन को की ज़रूरत है, इसीलिए पढ़े लिखों की मांग हो रही है. इंट्रिकेट टेक्निकल नॉलेज डिमांड करता है टेक्निकल नॉलेज के लिए. ऐसा नहीं कि इट्स एक्सपेंशन नीड्स साउंड लर्निंग, इट रिलाइज हेवली ऑन एक्सपर्टाइज, इट प्रमोट्स. नहीं, उसका डिमांड है, दैट्स वाई. नाउ नेक्स्ट, द ऑथर आर्ग्यूज. किस बात पे आर्ग्यू कर रहा है? सो ये बात है फॉर्मल एजुकेशन कैन बी ट्रेस्ड टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी. इसी बात पर वो आर्ग्यू कर रहा है. नाउ 98, राइट. द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोशलिस्ट आर बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ. किस चीज़ों पर स्टडी है? तो वो है ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इन द 19th सेंचुरी. दैट्स वाई मैंने बताया कि एक एग्जाम्पल दिया गया है इस चीज़ों का. तो 1870 मतलब 19th सेंचुरी, इसी से स्टडी हुई है. नेक्स्ट है द सोशलिस्ट रेफर्ड राइट टू इट इन द पैसेज say that the relationship between industry and elementary education was one. क्या? कैसा रिलेशनशिप? तो दैट वॉज बेस्ड इंटायरली ऑन द नीड ऑफ द इंडस्ट्री. मतलब बी, बेस्ड ऑन इंटायरली ऑन द नीड ऑफ इंडस्ट्री. वैसे ही वर्कर चाहिए जो उसके बेस पर हो. नाउ 100 ये दे रहा है बाय फंक्शनल रिलेशनशिप वी मीन्ड. फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है? मतलब है कि फंक्शन रिलेशनशिप प्रैक्टिकल एंड यूटिलिटेरियन रिलेशनशिप जिसको यूज किया जा सके, राइट. सो प्रैक्टिकल एंड यूटिलिटेरियन रिलेशनशिप, बी वुड बी द आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.